Hello everyone, Abhishek Patel this side. I welcome you in the very new video of Nirvana Training Academy. So in this video, we are going to learn about dead cat bounce setup and bottom fishing concept. So first of all, I want to just show you some of my trades that are generated from dead cat bounce setup and bottom fishing concept. So first of all, if you will see, this is Nifty 25250 put option. This is all about dead cat bounce. Now please look at the price that is 57, and if you will see the timing that is 9:24. So I entered at 9:24. I exited my trade at 9:31. I will use two languages, right? Hindi and English. So if you will see, I exited at 85. Now, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो. So we are having our custom indicator concept, and this blue arrow is marked by the broker done. All right. I'm speaking a little low, little slow because there are a lot of persons who are not able to understand my words, right? As per their request, I'm speaking now very slowly. Now, this is my second trade. This is also as per the dead cat bounce setup. Strike price is same, but look at the price. This is 90, and look at the timing. That is 9:34, and I exited straight nearby 20 rupees profit. All lot. Now let's come to the whole concept. Let's come to the trade logic. That what was happening on that time. Why I took this trade. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है इन डेड कैट बाउंस सेटअप सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे and we will simply mark the previous day close, previous day low, previous day high, such things. तो अभी मैं सिर्फ previous day close यहाँ पे मार्क करता हूँ और वापस मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊंगा. Now see, what I did here is I took my trade at 9:24 when the previous day close was about to be broken. My custom indicators oscillators was allowing me. अभी वो आपके पास नहीं है तो मैंने भी indicators ऑफ करके रखा है. अभी मैं आपको एडवांस फिबोनाची से भी दिखा दूं. सो दिस इज आर एडवांस फिबोनाची. मैं इसको डिलीट करूंगा ये पीडीसी को. अभी देखो प्रॉपर यहाँ पे रिजेक्शन प्राइस ने फेस किया और इतने इस बियर कैंडल के क्लोज पे मैंने मेरी एंट्री बनाई. अभी डेड कैट बाउंस सेटअप मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे. जस्ट सेकंड गाइस. सी, वी नीड प्रॉपर रेजिस्टेंस. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नीड प्रॉपर लेवल. कोई भी हमारे को ऐसा लेवल चाहिए एज पर एडवांस फिबोनाची, एज पर प्राइस एक्शन वी नीड अ लेवल, राइट? लेट्स से वी गॉट अ लेवल. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट अ सेकंड वॉइस. Okay, let's say this is a level. First, if the price is facing, let's say that if the price is taking support at this level, the level is broken and the price is taking support at this level. Now this is broken, okay? And now the price is facing a proper resistance. Price is facing proper resistance means COP happened. Let's say this is known as change of polarity. अगर यहाँ पे change of polarity हो रहा है एक लेवल का और प्राइस यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेड कैंडल मैं आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेट्स से दिस इज अ नेगेटिव कैंडल एंड देयर आर confirmation of the secret price action indicators. Let's say you don't have any price action indicators, no problem. You don't have advanced Fibonacci, no problem. But look at the candle, right? You can use on any time frame, no problem. 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. It's all about your choice and it's all about your frequency. Okay. But 5 minute time frame is good. I can say 5 minute time frame is good, right? Now you made an entry right here. Now what's your target? Next support level is your target. Okay. So this is just I can say beginning I can say chapter of dead cat bounce theory, right? अभी इसके बाद क्या? इसके बाद मैं आपको बॉटम फिशिंग कॉन्सेप्ट का भी अभी जस्ट एग्जांपल्स दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कम टू द टेलीग्राम. सो दिस इज 25000 कॉल ऑप्शन. अभी आप प्राइस देखो दैट इज 161. इफ यू विल सी द टाइमिंग 10:04 एग्जिट करा 10:08 पे 171.60. अभी इस ट्रेड के बाद एक और ट्रेड है हमारा एज पर बॉटम फिशिंग कॉन्सेप्ट और वो ट्रेड है ये रहा. अब सी 12:15 का ये स्नैपशॉट है. मैंने आप सभी के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर शेयर किया और इसके बाद क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी आई और ये चलता चला गया. इस ट्रेड में मेरी एंट्री कब हुई है? 12:28 at the price of 79,25100 call option when I exited at the price of 143 at the time of 12:36. सिंपल, जस्ट 8 मिनट्स ट्रेड और ये मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, राइट? सो दिस इज बॉटम फिशिंग कॉन्सेप्ट. अभी बॉटम फिशिंग कॉन्सेप्ट का पूरा कहानी क्या है? देख, मैंने आपको क्या बताया, एक हमारे पास लेवल होना चाहिए, उस लेवल पे प्राइस आए, सस्टेन करे, कोई आपको ऐसा
प्रॉपर बुलिश कैंडल मिले, मैं बॉटम फिशिंग कांसेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब आप अपना ट्रेड प्लान करोगे। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया बिकॉज़ मेरे पास मेरे कस्टम इंडिकेटर्स का अलाउंस यहाँ पे नहीं था। ये 1205 पे मेरे पास अलाउंस आया है, तो मैं इसके पहले कैसे ट्रेड ले लेता, राइट? 1205 पे मेरे पास अलाउंस आया है, तो मैं इसके पहले कैसे ट्रेड ले लेता? सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक अच्छा हेल्दी कैंडल चाहिए था। मुझे एक अच्छा हेल्दी कैंडल, ये पूरा रेंज ब्रेक होता हुआ ये वाला मिला 1228, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। इसके आगे कुछ भी बताने का ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है, काफ़ी है। नाउ इफ यू वांट टू लर्न दिस इन pure detailed manner, and if you want my advanced Fibonacci, if you want my custom indicators, you can simply WhatsApp me. I will mention my number at the description box. That's all I have to say. Thank you so much. Jai Siya Ram.